सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। உடையாய் பிறந்த பொருள் தோறும் நிற்றி பிரியாய் பேராயிரங்கள் உடையாய் பிறந்த பொருள் தோறும் நிற்றி பிரியாய் தீராய் பிரிந்து திரிவாய் திறந்தோறும் அவை தேரும் என்று தெளி பிரிந்து திரிவாய் திறந்தோறு அவை தேரும் என்று தெளியாய் ஊராயங்கை உடையாய் திரண்டு உருவாதி கோடல் உரிப்போம் ஊராயங்கை உடையாய் திரண்டு உருவாதி கோடல் உரிப்பான் ஆராயில் ஏ
We are celebrating today the birth centenary of Maharshi Ramana, the outstanding exemplar in the modern age of Jnana Marga, or the path of knowledge. ஞானம் பெறலாம் ஞானம் பெறலாம் நலம் பெறலாம் எந்நாளும் ஆனந்த வீட்டில் அமரலாம் ஆனந்த வீட்டில் அமரலாம் மோன நிலை கற்றுள்ளார் தேடும் கதி ரமணர் ரமணர் கண்ணோக்கம் பெற்று நாமாடப் பெறின் மோன நிலை கற்றுள்ளார் தேடும் கதி ரமணர் கண்ணோக்கம் பெற்று நாமாடப் பெறின் ரமணர் கண்ணோக்கம் பெற்று நாமாடப் பெறின். Sri Ramana attained illumination as a lad of 16 in July 1896. This was in Madurai, under the shadow of the great temple of Meenakshi Sundareshwara. A few weeks later, he came to Arunachala or Thiruvannamalai. Here, on and around this hill, he spent 450 years until his Mahanirvana in April 1950. A contemporary of Gandhiji and Sri Aurobindo, Maharishi Ramana belonged to the mainstream of Sanatana Dharma and continued the tradition of Ramakrishna and Vivekananda. If Ramakrishna spoke of Mother, Gandhiji of Rama, and Sri Aurobindo of Krishna, Maharishi Ramana regarded Shiva as his own chosen manifestation of the divine being awareness bliss. The Maharishi therefore represents at its purest the philosophy of Advaita, the negation of duality. He is in fact, as Carl Jung says, a true son of the Indian earth, the whitest spot in the white space of Indian monism. Akshara, the spirit imperishable, has to find its empirical home in Akshara, the letter. So egoless was the Maharishi that he took no pains to establish any dharma or found a new sangha. He was content to lose himself in the vast ocean of our common humanity. As those who have observed him for years have noted, his identification with the poorest of the poor was total and most touching. He sought no fame, and yet mature minds, many of them from foreign lands, were drawn to him. Earnest seekers elicited from him some precious works in prose and verse. Great poets like Kavyakanta, Ganapati Shastri and Muruganar wrote much and well about him, so that we now possess a lovely little library of books by him and on him. एकमक्षरं हृदि निरन्तरं भासते स्वयं लिख्यते कथम् हृदयकुहरमध्ये केवलं ब्रह्ममात्रम् ह्यहमहमिति साक्षात् आत्मरूपेण भाति
हृदि विषमनसा स्वं चिन्वतां मज्जता पवनचलनिरोधात् आत्मनिष्ठो भवत्वम् देहं मृण्मयवज्जडात्मकम् अहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तद्ददपेतसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः ओहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्टात्मनिष्ठात्मना सोऽहं स्फूर्तितयारुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयम् सोऽहं स्फूर्तितयारुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयम् अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयम्. Great things happen when man and mountain meet and the timeless breaks into time. The message of the Maharishi is straight and simple, clear and direct. Turn the mind inward, dive deep into the heart and discover who and what you are. For modern man, whose little warring self is sick and broken and unable to regain its true identity, the Maharishi's message provides the sovereign remedy. The self, supreme as awareness and bliss, is available and open anyone to enjoy here and now. அருணாச்சலத்திலுரு கருணாகர பரம அருணாரவிந்த பதமே அருணாச்சலத்திலுரு கருணாகர பரம அருணாரவிந்த பதமே அருணாரவிந்த பதமே அருணாச்சலத்திலுரு கருணாகர பரமல் அருணாரவிந்த பதமே அருணாச்சலத்திலுரு கருணாகர பரமல் அருணாரவிந்த பதமே பொருளாடும் சுற்றமொடு வருணாதிபத்தியுளம் மருளாடலன்று இதமும் பொருளாடும் சுற்றமொடு வருணாதிபத்தியுளம் மருளாடலன்று நிதமும் பெருநாடுளத்தினில் நல்லருணாடி நிற்கும் அவர் இருள்நாசமுற்று புவிமே பெருநாடுளத்தினில் நல்லருணாடி நிற்கும் அவர் இருள்நாசமுற்று புவிமே அருணாலயத்தில் எழுவார் தருணாருணக்கதிரின் அருணாளுற்று சுக அருணாலயத்தில் எழுவார். Indian tradition has down the ages played with symbols like the sun and moon, rivers and mountains.
Shiva, Rama, and Krishna, the most popular manifestations of Godhead. They too are symbols, symbols that live with a life of their own. The Maharishi makes admirable use of Krishna as the master of Buddha Yoga and of Rama as the model of selfless and heroic action. But the dominant symbol which overpowers him by its mere presence is Arunachala, the holy mountain, with its tangible suggestion of steadfast permanence and central peace subsisting at the heart of endless agitation. In retaining a myth, recognizing it as a myth, and revitalizing it by explaining its meanings, the Maharshi is a typical Indian teacher. To him, as to most unspoilt minds, aesthetic experience and spiritual experience are not only closely related but are at the highest level even interchangeable. This is illustrated in the story of the song that follows Arunachala Pancharatnam. One morning in 1917, Kavyakanta Ganapati Shastri, the eminent Sanskrit poet, implored the sage to try his hand at a Sanskrit poem, and that too in the difficult Arya meter. As the Maharishi pleaded his ignorance of Sanskrit prosody, Kavyakanta explained to him the structure and niceties of this form of verse. A few hours later, the Maharishi presented to the astonished scholar these 5 pregnant stanzas in perfect Sanskrit. This hymn, besides being beautiful, embodies the subtleties of Advaita philosophy. Karunapurna Sudhabde, Karunapurna Sudhabde, Kabalita Ghana Vishwarupa Kiranavalya, Karunapurna Sudhabde, Kabalita Ghana Vishwarupa Kiranavalya, Arunachala Paramatma, Arunachala Paramatma, Arunabhava Chittakanja Suvikasaya, Arunachala Paramatma, Arunabhava Chittakanja Suvikasaya, Tvai Arunachala Sarvam Bhutva Sthitva Pralinam Etat Chitram, Tvai Arunachala Sarvam Bhutva Sthitva Pralinam Etat Chitram, Hridayaghamiti Atmataya, Hridayaghamiti Atmataya, Vidyasi Bhoste Vadanti Hridayam Nama, Hridayaghamiti Atmataya, Vidyasi Bhoste Vadanti Hridayam Nama, Hridayam Nama. Ahamiti Kuta Ayati Iti Anvishantaha, Pravishtayatyamaladhiya, Ahamiti Kuta Ayati Iti Anvishantaha, Pravishtayatyamaladhiya, Avagamya Swam Rupam Shamyati Arunachala Tvayi Nadivabdho, Avagamya Swam Rupam Shamyati Arunachala
शान्तस्मा ध्यायन् पश्यति योगी दीधितिं ध्यायन् पश्यति योगी दीधितिम् अरुणाचलत्वयि महीयन्ते अरुणाचलत्वयि महीयन्ते यर्पित मनसा त्वां पश्यन् सर्वं तवाकृतितया सततं वैयर्पित मनसा त्वां पश्यन् सर्वं तवाकृतितया सततं भजते अनन्य प्रीत्या सजयति अरुणाचलत्वयि सुखे मग्नः भजते अनन्य प्रीत्या सजयति अरुणाचलत्वयि सुखे मग्नः भजते अनन्य प्रीत्या सजयति अरुणाचलत्वयि सुखे मग्नः. In the first verse, the unity of awareness as being and its power as inclusive harmony and mutual relationship are symbolized by the ocean of grace, the mountain, the sun, and the heart lotus, which opened once will never shut again. In the second verse, the real self is exteriorized as the mountain on which Maya projects the world picture, and it is again interiorized as the awareness which is bliss. Shiva dances as I in the heart space and soars in stillness as Aruna Hill. The third verse describes the method of inquiry, the sadhana, in which the sadhaka and the siddha disappear and the self alone remains. The last two verses assure victory to the follower of yoga, bhakti and karma, because once the ego is dissolved, one sports in the sea of bliss, which is one's true being. In the Maharishi's view, the scientific method of self-inquiry can well go hand in hand with the poetic method of self-surrender. Far from there being any conflict between jnana and bhakti, the two modes of awareness are complementary and reinforce each other. Muruganar, a great Tamil poet in his own right and an ardent lifelong devotee of the Maharishi, declares in ringing Tamil words, "True seer who sees in all the worlds naught but the Spirit Supreme, he overcame the universe with naught but inner strength, a fortress of security to devotees, his feet, naught save their shadow is sanctuary for us." பரநல்லது பாராதிகள் பாராதம்மை பார்ப்பான் பரநல்லது பாராதிகள் பாராதம்மை பார்ப்பான் உரநல்லது துணையின்றி இவ்வுலகியாவையும் நின்றான் உரநல்லது துணை
சரணில்லை நமக்கே ரமண சரணல்லது மற்றும் சரணில்லை நமக்கே. Ramana's message, with its two ingredients of self-inquiry and self-surrender, provides a hopeful remedy for the many maladies afflicting modern man. Lakshmana Sharma, the renowned naturopath, pays this homage to the Maharishi, the Mahayogi, and the master physician. ॐ तत्सदाख्यं पुरुषं गुहेशम् ॐ तत्सदाख्यं पुरुषं गुहेशं नतार्तिनाशाय शरीरवन्तम् ॐ तत्सदाख्यं पुरुषं गुहेशं नतार्तिनाशाय शरीरवन्तम् मोदस्वरूपं मधुरस्वभावं मोदस्वरूपं मधुरस्वभावं त्वामात्मनाथो रमणं भजामि त्वामात्मनाथो रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि. भजन्ति ये त्वां परभक्तियुक्ताः गलन्ति तेषां निखिलाश्च दोषाः. भजन्ति ये त्वां परभक्तियुक्ताः गलन्ति तेषां निखिलाश्च दोषाः. विशेषमुक्तिः सकलापि सिद्धिः विशेषमुक्तिः सकलापि सिद्धिः त्वामात्मनाथो रमणं भजामि त्वामात्मनाथो रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि. तेजस्विनो दीनजनाश्च भक्त्या श्रीसन्निधिं ते शरणं व्रजन्ते. तेजस्विनो दीनजनाश्च भक्त्या श्रीसन्निधिं ते शरणं व्रजन्ते. रमेतरूपे तव को न दिव्ये रमेतरूपे तव को न दिव्ये त्वामात्मनाथं रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि. मदन्तरङ्गे निवसद्वनघाणातातवाख्या सकलागहन्त्री. मदन्तरङ्गे निवसद्वनघाणातातवाख्या सकलागहन्त्री. यतो हृदि त्वं न ततोऽस्ति वाच्यं यतो हृदि त्वं न ततोऽस्ति वाच्यं. त्वामात्मनाथं रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि रमणं भजामि रमणं भजामि रमणं भजामि रमणं भजामि
You have been listening to a special program of music on the occasion of the birth centenary of Shri Ramana Maharshi, the sage of Tiruvannamalai. The songs were rendered by Srimati M.S. Subbulakshmi. Professor K. Swaminathan introduced the program. श्रीमन्नारायण 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 निश्रीपादवे शरणु 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 कमला सती मुख कमल कमलहित कमल प्रिय कमलेक्षण कमला सती मुख कमल कमलहित कमल प्रिय कमलेक्षण कमला सती मुख कमल कमलहित कमल प्रिय कमलेक्षण कमलासनहित गरुड गमन श्री कमलनाभनि पद कमल में शरणु कमलासनहित गरुड गमन श्री कमलनाभनि पद कमल में शरणु श्रीमन्नारायण 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 निश्रीपादवे शरणु परमयोगी जन भागधेय श्री परम पुरुष परात्पर परमयोगी जन भागधेय श्री परम पुरुष परात्पर परमयोगी जन भागधेय श्री परम पुरुष परात्पर परमात्मा परमाणु रूप श्री तिरुवेंकटगिरि देवा परमात्मा परमाणु रूप श्री तिरुवेंकटगिरि देवा शरणु श्रीमन्नारायण 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 निश्रीपादवे शरणु
காணப்படு பொறுக்கும் கண்ணாகி பூம்பாய் போலிற்றியால் யாதொன்றும் பூணாத மாண்பால் உலகை வயிற்று ஒழித்து வாக்குதியாய் ஆண் பாலோ பெண் பாலோ அப்பாலோ எப்பாலோ ஆண் பால் உலகை வயிற்று ஒழித்து வாக்குதியாய் ஆண் பாலோ பெண் பாலோ அப்பாலோ எப்பாலோ. காண்பார்க்கும் காணப்படு பொறுக்கும் கண்ணாகி பூம்பாய் போல் நெற்றியால் யாதொன்றும் பூணாத காண்பார்க்கும் காணப்படு பொறுக்கும் கண்ணாகி பூம்பாய் போல் நெற்றியால் யாதொன்றும் பூணாத மாண்பால் உலகை வயிற்று ஒழித்து வாக்குதியாய் ஆண் பாலோ பெண் பாலோ அப்பாலோ எப்பாலோ ஆண் பால் உலகை வயிற்று ஒழித்து வாக்குதியாய் ஆண் பாலோ பெண் பாலோ அப்பாலோ எப்பாலோ. देवकी नंदन नंद कुमार वृंदावनाचन गोकुल चंद्र देवकी नंदन नंद कुमार वृंदावनाचन गोकुल चंद्र कंद फलाशन सुंदर रूप नंदित गोकुल वंदित पाद इंद्र सुतावक नंदक हस्त चंदन चर्चित सुंदरी नाथ इंद्र सुतावक नंदक हस्त चंदन चर्चित सुंदरी नाथ इंदीवरोदर नयन मंदरधारि गोविंद वंदे चंद्रशतानन कुंद सुहासन नंदित देवतानंद सुपूर्ण चंद्रशतानन कुंद सुहासन नंदित देवतानंद सुपूर्ण मत्स्य करूप लयोद विहारिं वेद विनेत्रे चतुर्मुख वन्द्य कूर्म स्वरूपक मन्दरधारिं लोक विधारक देववरेण्य कूर्म स्वरूपक मन्दरधारिं लोक विधारक देववरेण्य सुकर रूपक दानव शत्रो भूमि विधारक यज्ञवरांग देव नृसिंह हिरण्यकशत्रो सर्वभयातक दैवत बन्धो देव नृसिंह हिरण्यकशत्रो सर्वभयातक दैवत बन्धो वामन वामन मानव वेश दैत्यवरान्तक कारणभूप राम भृगुद्वः सुजित दीप्ते क्षत्रकुलान्तक शम्भुवरेण्य
रामभृगूद्वः सूर्जितदीप्ते क्षत्रकुलान्तक शम्भुवरेण्य राघव राघव राक्षसशत्रो मारुतिवल्लभ जानकीकान्त देवकी नन्दन सुन्दर रूप रुक्मिणी वल्लभ पाण्डव बन्धो देवकी नन्दन सुन्दर रूप रुक्मिणी वल्लभ पाण्डव बन्धो दैत्य विमोहक नित्य सुखादे देव सुबोधक बुद्ध स्वरूप दुष्ट कुलान्तक कल्कि स्वरूप धर्म विवर्धन मूल युगादे दुष्ट कुलान्तक कल्कि स्वरूप धर्म विवर्धन मूल युगादे नारायण अमल कारणमूर्ते नारायण अमल कारणमूर्ते पूर्णगुणार्णव नित्य विबोध पूर्णगुणार्णव नित्य विबोध. This is All India Radio. अरुणाचल ज्योति जय जय करुणालय ज्योति. In connection with the birth centenary of Shri Ramana Maharshi, the sage of Tiruvannamalai, we now bring you a special program of music by Srimati M.S. Subbulakshmi. Professor K. Swaminathan introduces the program. We are celebrating today the birth centenary of Maharshi Ramana, the outstanding exemplar in the modern age of Jnana Marga, or the path of knowledge. ஞானம் பெறலாம் ஞானம் பெறலாம் நலம் பெறலாம் எந்நாளும் ஆனந்த வீட்டில் அமரலாம் ஆனந்த வீட்டில் அமரலாம் மோன நிலை கற்றுள்ளார் தேடும் கதி ரமணர் ரமணர் கண்ணோக்கம் பெற்று நாமாடப் மோன நிலை கற்றுள்ளோர் தேடும் கதி ரமணர் கண்ணோக்கம் பெற்று நாமாடப்பெறின் ரமணர் கண்ணோக்கம் பெற்று நாமாடப்பெறின். Sri Ramana attained illumination as a lad of 16 in July 1896. This was in Madurai, under the shadow of the great temple of Meenakshi Sundareshwara. A few weeks later, he came to Arunachala or Tiruvannamalai. Here, on and around this hill, he spent 450 years until his Mahanirvana in April 1950. A contemporary of Gandhiji and Sri Aurobindo, Maharishi Ramana belonged to the mainstream of Sanatana Dharma and continued the tradition of Ramakrishna and Vivekananda. If Ramakrishna spoke of Mother, Gandhiji of Rama, and Sri Aurobindo of Krishna, Maharishi Ramana regarded Shiva as his own chosen manifestation
of the divine being awareness bliss. The Maharishi therefore represents at its purest the philosophy of Advaita, the negation of duality. He is in fact, as Carl Jung says, a true son of the Indian earth, the whitest spot in the white space of Indian monism. Akshara, the spirit imperishable, has to find its empirical home in Akshara, the letter. So egoless was the Maharishi that he took no pains to establish any dharma or found a new sangha. He was content to lose himself in the vast ocean of our common humanity. As those who have observed him for years have noted, his identification with the poorest of the poor was total and most touching. He sought no fame, and yet mature minds, many of them from foreign lands, were drawn to him. Earnest seekers elicited from him some precious works in prose and verse. Great poets like Kavyakanta, Ganapati Shastri and Muruganar wrote much and well about him, so that we now possess a lovely little library of books by him and on him. एकमक्षरं हृदि निरन्तरं भासते स्वयं लिख्यते कथम् हृदयकुहरमध्ये केवलं ब्रह्ममात्रम् ह्यहमहमिति साक्षात् आत्मरूपेण भाति हृदि विषमनसा स्वं चिन्वतां मज्जता पवनचलनिरोधात् आत्मनिष्ठो भवत्वम् देहं मृण्मयवज्जडात्मकम् अहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तद्ददपेतसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्टात्मनिष्ठात्मना स्वोऽहं स्फूर्तितयारुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयम् स्वोऽहं स्फूर्तितयारुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयम् अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयम्. Great things happen when man and mountain meet and the timeless breaks into time. The message of the Maharishi is straight and simple, clear and direct. Turn the mind inward, dive deep into the heart and discover who and what you are. For modern man, whose little warring self is sick and broken and unable to regain its true identity, the Maharishi's message provides the sovereign remedy. The self, supreme as awareness and bliss, is available and open to anyone to enjoy here and now. அருணாச்சலத்திலுரு கருணாகர பரம
அருணாரவிந்த பதமே அருணாச்சலத்திலுரு கருணாகர பரமன் அருணாரவிந்த பதமே அருணாரவிந்த பதமே அருணாச்சலத்திலுரு கருணாகர பரமல் அருணாரவிந்த பதமே அருணாச்சலத்திலுரு கருணாகர பரமல் அருணாரவிந்த பதமே பொருநாடும் சுற்றமொடு வருணாதி பற்றியுளம் மருளாடலன்று இதமும் பொருநாடும் சுற்றமொடு வருணாதி பற்றியுளம் மருளாடலன்று நிதமும் பெருநாடுளத்தினில் நல்லருணாடி நிற்கும் அவர் இருள்நாசமுற்று புவிமே பெருநாடுளத்தினில் நல்லருணாடி நிற்கும் அவர் இருள்நாசமுற்று புவிமே தருணாருணக்கதிரில் அருணாளுமுற்று சுக அருணாலயத்தில் எழுவார் தருணாருணக்கதிரில் அருணாளுமுற்று சுக அருணாலயத்தில் எழுவார். Indian tradition has down the ages played with symbols like the sun and moon, rivers and mountains. Shiva, Rama and Krishna, the most popular manifestations of Godhead. They too are symbols, symbols that live with a life of their own. The Maharishi makes admirable use of Krishna as the master of Buddha Yoga and of Rama as the model of selfless and heroic action. But the dominant symbol which overpowers him by its mere presence is Arunachala, the holy mountain, with its tangible suggestion of steadfast permanence and central peace subsisting at the heart of endless agitation. In retaining a myth, recognizing it as a myth, and revitalizing it by explaining its meanings, the Maharshi is a typical Indian teacher. To him, as to most unspoilt minds, aesthetic experience and spiritual experience are not only closely related but are at the highest level even interchangeable. This is illustrated in the story of the song that follows, Arunachala Pancharatnam. One morning in 1917, Kavyakanta Ganapati Shastri, the eminent Sanskrit poet, implored the sage to try his hand at a Sanskrit poem, and that too in the difficult Arya meter. As the Maharishi pleaded his ignorance of Sanskrit prosody, Kavyakanta explained to him the structure and niceties of this form of verse. A few hours later, the Maharishi presented to the astonished scholar these 5 pregnant stanzas in perfect Sanskrit. This hymn, besides being beautiful, embodies the subtleties of Advaita philosophy. करुणापूर्ण सुधाब्धे करुणापूर्ण सुधाब्धे कबलित घन विश्वरूप किरणावल्य
करुणापूर्ण सुधाब्धे कबलितघन विश्वरूप किरणावल्या अरुणाचल परमात्मा अरुणाचल परमात्मा अरुणाभव चित्तकञ्ज सुविकासाय अरुणाचल परमात्मा अरुणाभव चित्तकञ्ज सुविकासाय त्वयि अरुणाचल सर्वं भूत्वा स्थित्वा प्रलीनम् एतत् चित्रं त्वयि अरुणाचल सर्वं भूत्वा स्थित्वा प्रलीनम् एतत् चित्रं हृदि अघमिति आत्मतया हृदि अघमिति आत्मतया नृत्यसि भोस्ते वदन्ति हृदयो नाम हृदि अघमिति आत्मतया नृत्यसि भोस्ते वदन्ति हृदयो नाम हृदयो नाम अहमिति कुत आयाति इति अन्वेष्यान्तः प्रविष्टयात्यमलधिया अहमिति कुत आयाति इति अन्वेष्यान्तः प्रविष्टयात्यमलधिया अवगम्य स्वं रूपं शाम्यति अरुणाचल त्वयि नदीवब्धो अवगम्य स्वं रूपं शाम्यति अरुणाचल त्वयि नदीवब्धो त्यक्त्वा विषयं पाह्यं रुद्धप्राणेन रुद्धमनसा त्यक्त्वा विषयं बाह्यं रुद्धप्राणेन रुद्धमनसा ध्यायं पश्यति योगी दिधितिं ध्यायं पश्यति योगी दिधितिं अरुणाचल त्वयि महीयन्ते अरुणाचल त्वयि महीयन्ते यत्पित मनसा त्वां पश्यन् सर्वं तवाकृतितया सततं वैयर्पित मनसा त्वां पश्यन् सर्वं तवाकृतितया सततं भजते अनन्य प्रीत्या सजयति अरुणाचल त्वयि सुखे मग्नः भजते अनन्य प्रीत्या सजयति अरुणाचल त्वयि सुखे मग्नः भजते अनन्य प्रीत्या सजयति अरुणाचल त्वयि सुखे मग्नः. In the first verse, the unity of awareness as being and its power as inclusive harmony and mutual relationship are symbolized by the ocean of grace, the mountain, the sun, and the heart lotus, which opened once will never shut again. In the second verse, the real self is exteriorized as the mountain on which Maya projects
the world picture, and it is again interiorized as the awareness which is bliss. Shiva dances as I in the heart space and soars in stillness as Aruna Hill. The third verse describes the method of inquiry, the sadhana, in which the sadhaka and the siddha disappear and the self alone remains. The last two verses assure victory to the follower of yoga, bhakti and karma, because once the ego is dissolved, one sports in the sea of bliss which is one's true being. In the Maharishi's view, the scientific method of self-inquiry can well go hand in hand with the poetic method of self-surrender. Far from there being any conflict between jnana and bhakti, the two modes of awareness are complementary and reinforce each other. Muruganar, a great Tamil poet in his own right and an ardent lifelong devotee of the Maharishi, declares in ringing Tamil words, "True seer who sees in all the worlds naught but the Spirit Supreme. He overcame the universe with naught but inner strength. A fortress of security to devotees, his feet, naught save their shadow is sanctuary for us." பரநல்லது பாராதிகள் பாராதம்மை பார்ப்பான். பரநல்லது பாராதிகள் பாராதம்மை பார்ப்பான். உரநல்லது துணையின்றி இவ்வுலகியாவையும் சரணில்லை நமக்கே. ரமண சரணல்லது மற்றும் ஒரு சரணில்லை நமக்கே. Ramana's message, with its two ingredients of self-inquiry and self-surrender, provides a hopeful remedy for the many maladies afflicting modern man. Lakshmana Sharma, the renowned naturopath, pays this homage to the Maharishi, the Mahayogi and the master physician. ॐ तत्सदाख्यं पुरुषं गुहेशं ॐ तत्सदाख्यं पुरुषं गुहेशं नतार्तिनाशाय शरीरवन्तं तत्सदाख्यं पुरुषं गुहेशं नतार्तिनाशाय शरीरवन्तं मोदस्वरूपं मधुरस्वभावं मोदस्वरूपं मधुरस्वभावं त्वामात्मनाथो रमणं भजामि त्वामात्मनाथो रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि भज
भजन्ति ये त्वां परभक्तियुक्ताः गलन्ति तेषां निखिलाश्च दोषाः भजन्ति ये त्वां परभक्तियुक्ताः गलन्ति तेषां निखिलाश्च दोषाः विशेषमुक्तिः सकलापि सिद्धिः विशेषमुक्तिः सकलापि सिद्धिः त्वामात्मनाथो रमणं भजामि त्वामात्मनाथो रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि तेजस्विनो दीनजनाश्च भक्त्या श्रीसन्निधिं ते शरणं व्रजन्ति तेजस्विनो दीनजनाश्च भक्त्या श्रीसन्निधिं ते शरणं व्रजन्ति रमेतरूपे तव को न दिव्ये रमेतरूपे तव को न दिव्ये त्वामात्मनाथं रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि मदन्तरङ्गे निवसद्वनघाणातातमाख्या सकलागहन्त्री मदन्तरङ्गे निवसद्वनघाणातातमाख्या सकलागहन्त्री यतो हृदि त्वं न ततोऽस्ति वाच्यं यतो हृदि त्वं न ततोऽस्ति वाच्यं त्वामात्मनाथं रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि त्वामात्मनाथं रमणं भजामि रमणं भजामि रमणं भजामि रमणं भजामि रमणं भजामि रमणं भजामि रमणं भजामि. You have been listening to a special program of music on the occasion of the birth centenary of Shri Ramana Maharshi, the sage of Tiruvannamalai. The songs were rendered by Srimati M.S. Subbulakshmi. Professor K. Swaminathan introduced the program. This program came to you from the studios of All India Radio, Madras.